Starting off with control of gene expression. Today we'll finish off inheritance and then start its topicals as well. फिर हमारे सिर्फ दो चैप्टर्स और रह जाएंगे और एक तो आपने आई गेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से आप पूरा कर लोगे द बायोडाइवर्सिटी वन. A gene जी is मैंने said to पूरा be किया था। expressed when it is transcribed to mRNA and then mRNA is translated to produce proteins. Only a tiny proportion of the genes present in the nucleus of the cell are actually expressed at any one time. For example, the gene for melanin production will never be expressed in your heart muscle cell. जहाँ पे जो चीज needed है, it's gonna be expressed over there. Proteins कैसे बनती हैं? Through two processes. You already know transcription and translation. Transcription is when mRNA is produced and translation where mRNA is converted into a polypeptide chain through on the ribosomes. Now in this section, you will look how the expression of a gene controlled in a prokaryote organism and the bacterium E. coli. ठीक है, prokaryotes के अंदर बैक्टीरिया आते हैं तो we are going to study E. coli example as an example और फिर gene expression in eukaryotes देखें किस तरह से controlled होता है. An understanding of how genes are switched on and off first came from the studies on bacteria. One of the most studied genes is one that codes for the production of the enzyme B-galactosidase. This enzyme is used by some bacteria to hydrolyze lactose in the bacterium's environment to glucose and galactose. सबसे पहले एक studied gene है for the production of beta galactosidase. ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है which is used to hydrolyze lactose in the bacteria's environment ताकि वो लैक्टोज को तोड़ के बैक्टीरिया क्या बना सके, ग्लूकोज एंड galactose which can be absorbed and used as an energy source by the cells. तो बैक्टीरियल सेल्स क्या करते हैं, उनमें जो लैक्टोज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होते हैं विच आर ऑल्सो देयर. हम आगे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर योगर्ट प्रोडक्शन के अंदर. वो अपने अंदर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अब वो ब्रेक डाउन कैसे होता है? बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज. नाउ द जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन क्या होती हैं? दैट कोड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन दैट इज यूज्ड बाय अ सेल. एक ऐसी प्रोटीन को जो जीन कोड करे जो कि सेल यूज कर रहा है बकायदा, वो एक स्ट्रक्चरल जीन है. Some structural genes live up by their name by coding for proteins that becomes part of the structure in the cell, but many structural genes have other roles as well, such as coding for enzymes. The expression of the lactase gene is controlled by other genes that lie close to it on a circular DNA molecule. We call those regulatory genes. रेगुलेटरी जीन जो साइड पे स्ट्रक्चर के साथ साथ जो काम कर रही होती हैं, उस ट्रेट को, उस कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट करने के लिए, they are known as regulatory gene. A beta galactosidase is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of lactose to glucose and galactose. Structural genes is something that codes for a protein that has function within a cell. Regulatory gene is a gene that codes for a protein that helps to control the expression of other genes पर. तो स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी जीन्स, ये दोनों टाइप ऑफ जीन्स टुगेदर काम करेंगी एंड दे आर फाउंड इन ग्रुप क्लस्टर में. वी कॉल दीज क्लस्टर एंड ऑपरॉन. ऑपरॉन ऑपरेशन से निकला. ठीक है, दिस क्लस्टर ऑफ जीन्स विच कंटेन स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन को कंबाइंड हम कहते हैं ऑपरॉन, which is responsible for the production of lactase in bacteria called lac operon, and the structure of the lac operon is shown in figure 16.13 जो हम आगे देखेंगे. अब ई कॉलाई बैक्टीरिया में देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट, और ये डिपेंड कर रहे थे हर सेल में. उस सेल में ये ज्यादा होंगे जहां पे लैक्टोज ज्यादा है, और उस सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज कम ही होगी जहां पे कम लैक्टोज है उस मीडियम के अंदर. सो द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्टर्ड बाय स्विचिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन ऑन एंड ऑफ. अब एंजाइम एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने देखे कि एंजाइम एक्टिविटी तब तेज होती है व्हेन वी हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम. हम क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं ताकि ये प्रोड्यूस ना हो. जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उस मीडियम के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी. तो ये लैक ऑपरॉन also contains other structural genes that also code for beta galactosidase, जिसमें आपके पास लैक जी है जो कोड करती है, लैक वाई है दैट कोड्स फॉर परमिएज. परमिएज एंजाइम क्या है? जो लैक्टोज को सेल में दाखिल होने देता है. और फिर एक लैक ए है जो कोड करती है ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका मैं अभी आगे बताता हूँ क्या फंक्शन है. सो इस लैक ऑपरॉन के अंदर तीन और टाइप्स भी है. मेन आपके पास लैक जी है जिसके पास कोड पड़ा है इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने का. नाउ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज जीन्स इज कंट्रोल्ड बाय सम प्रोमोटर एंड दे आर ऑल ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम. The sequence of events when there is no lactose in the medium in which the bacterium is growing as follows. So this is what? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास डिफरेंट जीन्स लगे होते हैं. एक डीएनए का मॉलिक्यूल में जल्दी से बताऊं, ठीक है, ये एक होता है ना,
इफ वी लुक एट वन क्रोमेटिड, ठीक है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या क्या होते हैं? यू हैव टू क्रोमोसोम्स जॉइंट टुगेदर इन टू क्रोमेटिड फॉर्म, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस जीन के ऊपर आपके पास ये जीन्स लगे होते हैं। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है ना। नाउ दीज आर द जीन्स प्रेजेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, गॉट इट? वो आप Yeah. देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। डिफरेंट जीन्स डीएनए पे होते हैं, डीएनए जीन्स में नहीं होता है, वेरी कॉमन मिस्टेक। सो यहाँ पे आप देखो प्रमोटर रेगुलेटरी जीन लगा हुआ है, फिर रेगुलेटरी जीन है, फिर प्रोमोटर फॉर स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये प्रोमोटर क्या कर रहा होता है कि कौन सा जीन कब ट्रांसक्राइब होगा। स्ट्रक्चरल जीन्स तभी ट्रांसक्राइब होंगे जब इसका प्रोमोटर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ऑपरेटर है जिसमें ये तीनों ओप्रॉन्स टाइप की प्रेजेंट है, ठीक है। सो ओप्रॉन क्या है? एक functional unit of the transcription, a cluster of genes that are controlled by the same promoter. Lac operon is an operon found in some bacteria that controls the production of beta galactosidase and two other structural proteins. The regulatory gene codes for a protein called repressor, and the repressor binds to the operator region close to the gene for bacteria galactosidase. बिकॉज द रिप्रेसर, अब क्या है? रिप्रेसर एक उलट चीज है। दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन नोन एज रिप्रेसर। रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन आपके पास कहाँ पे? जहाँ पे सारे लैक ऑपरॉन्स आर अबाउट टू प्रोड्यूस। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, डीएनए रीड किया जाता है ना, तो ये ऑपरेटर जब तक अलाउ करेगा, ओनली देन दिस लैग जी वाई एंड ए वुड बी एबल टू बी रेड। अब रिप्रेसर अटैच होता है ऑपरेटर के ऊपर। सो द आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू द डीएनए एट द प्रोमोटर रीजन एंड देयर वुड बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ये काम रोक देती है, एंड इट हैज टू बाइंडिंग साइट्स। दिस रिप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड टू द डीएनए एट वन साइड एंड टू द लैक्टोज एट द अदर। तो यहाँ पे अपनी वो शेप भी चेंज कर देते हैं और बाइंडिंग साइट ही पकड़ के क्लोज कर देता है। इफ यू सी, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जैसे डीएनए पॉलीमरेज आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है ना, जो एक और स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी ट्रांसक्राइब कर रहा है ना, क्योंकि इस आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये सारी चीजें लेके कहाँ जाना है? एमआरएनए बनाने। एमआरएनए फिर राइबोसोम के ऊपर जाएगा ना, जाके क्या प्रोटीन बना के दो। हम ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दे रहे। हम आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज ने बनाना होता है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जब बनेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये वाला एरिया ही खाली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन लगी हुई थी, उसने ये बाकी वाले रीड ही नहीं होने दिए। अब ये एमआरएनए मॉलिक्यूल जाके आपके पास जब एक राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाएगा, और वहां पे जो आपकी टीआरएनए की मदद से वो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसके अंदर ये वाले तीन लैक वाले जीन्स होंगे ही नहीं। समझ आई? मतलब Yeah. protein बनेगी, good. So when lactose binds to its site, the shape of the repressor protein changes. The regulatory gene codes for lac repressor protein, but when the lac repressor protein is attached to the operator gene, RNA polymerase cannot attach to the DNA. And if lactose is present, it binds to the lac repressor protein, which is detached from the DNA. This allows RNA polymerase to bind and transcribe the operon structural genes. When lactose is present in the medium in which the bacteria is growing, the following processes occur. Lactose is taken up by the bacterium. जब lactose present होगा मीडियम में और बैक्टीरिया ग्रो, तब तो सारे नॉर्मल प्रोसेस होने हैं, ठीक है। Lactose would be taken up by the bacterium. Lactose would bind to the repressor protein as well, preventing it to binding to DNA, and transcription would no longer be inhibited as well. ये वो केस है जब ये तीनों की तीनों लैक्स आपके पास प्रेजेंट है। Now the genes have been switched on and are transcribed together. The bacterium can now absorb and break down lactose. पहले हमने देखा कि ऑफ कर दिए गए हैं रिप्रेसर की मदद से, अब ऑन हो गए। Now the mechanism allows the bacteria to produce beta galactosidase, permease and transacetylase as well. तीनों लैक Y, A और Z जब आ गए हैं, अब तीनों चीजें बनेंगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आपके पास बन जाएगा, परमीएज भी बन जाएगा जो लैक्टोज को आने देगा, और ट्रांस एसिटाइलेज भी बन जाएगी जो कि प्रोड्यूस भी कर देगा। Only lactose is now present, and to produce them in equal amounts, it avoids the waste of energy material in producing enzyme for taking up hydrolyzing a sugar. और इसमें ये आगे वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम। मतलब कि ये तभी सिंथेसाइज होगा जब उसका सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ये नहीं कि आपकी बॉडी में, मैं कहूँ कि आपकी बॉडी में लिपिड्स नहीं है तो लाइपेज नहीं बनेगा, ठीक है। हमारी बॉडी में लिपिड्स हो या ना हो, लाइपेज लाइपेज बनता ही बनता है हर वक्त। वो नॉन इंड्यूसिबल एंजाइम है। इंड्यूसिबल एंजाइम क्या होते हैं? जैसे आपके पास आप कह लो ग्लूकागॉन है, ठीक है। ग्लूकागॉन तो एक हार्मोन हो गया। मतलब समझो वो एक एंजाइम है। मेरी बॉडी में जब शुगर कम होगी तब ही बनेगा, ये नहीं कि हर वक्त बनता फिरता रहेगा।
So the Yeah. presence of the substrate induces the transcription of the gene. जब lactose present होगा तभी ये beta galactosidase बनना start होगा. And the binding of the affected molecule to the repressor prevents the repressor from binding to the operator. The repressor is released and transcription proceeds. The production of other enzymes called the repressible enzymes is controlled in a slightly different way. Here, the binding of the affected molecule to the repressor helps it to bind to the receptor operator. So the repressor attaches to the operator region, which again stops the transcription. जब ऑब्वियसली आपके पास सबस्ट्रेट ही नहीं होगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिप्रेसर वाले के लिए कोड होना शुरू हो जाएगा. जब वो नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन वाले के लिए कोड होना शुरू हो जाएगा. इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के लिहाज से, यू शुड नो दिस प्रोसेस. रिप्रेसर वाले, ये 3 वेट डायग्राम, ठीक है. यू शुड नो दीज 3 नेम्स, ठीक है. लैक ऑपरॉन और ऑपरॉन क्या होता है, बस ये वाला बेशक ना पढ़ो, इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल वगैरह वगैरह, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the transcription factors in eukaryotes. Eukaryotes do not have operons as the prokaryotes do. Instead, the expression of genes in eukaryotes is controlled by transcription factors. हमारा जो जीन कंट्रोल करेंगे वो होंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, which is a protein that binds to DNA and affects whether or not a gene is transcribed. The role of transcription factors is to make sure that genes are expressed in the correct cell at the correct time at the correct extent. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने चीज इंश्योर करनी है. In humans, for example, about 10% of the genes are thought to code for proteins that act as transcription factors. Some transcription factors bind to the promoter region of a gene, either allowing or preventing its transcription. Their presence either increases or decreases the rate of transcription of a gene. And there are many types of transcripting factors जो अब आपने important सुनने हैं. Scientists have probably discovered only a small proportion of them so far, and the research continues to find new ones and increase understandings of how they work as well. Some of them are included below as well, but you do not need to know any details of these. But bullet points में थोड़ा थोड़ा आप बस points वगैरह note कर लेना जो पेपर में चाहिए होंगे. कुछ होते हैं general transcription factors which are necessary for every transcription to occur for forming any type of protein complex and everything. फिर कुछ other transcription factors हैं which are there to activate certain genes, ठीक है. या फिर zygote की जो 16 cell stages development होती हैं, important है. 16 सेल स्टेजेस में एक जाइगोट डेवलप होते हैं टू फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो बेबी. वो तब तक नहीं होगा जब तक आपको अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं होंगे, जैसे कि जाइगोट में कुछ बॉडी के रीजन्स फॉर्म करने हैं, उस बेबी की उंगली फिंगर्स बनने के लिए कुछ प्रोटीन रिक्वायर है वो एक्टिवेट करने के लिए. ओवरऑल द ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. बट दो स्मॉल फैक्टर्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत और छोटी छोटी चीजें एक जाइगोट के अंदर देखनी होती है. इवन द आई लैशेज are also seen by the other transcription factors when it has actually when you have to actually form a proper fetus. Our transcription factor is also responsible for the determination of sex in mammals. Transcription factor also allow responses in environmental stimuli. Some of them are also proto-oncogenes. Tumor suppressor genes इतनी जरूरी है जो आपकी oncogenes को spread ही ना होने दे, वरना कैंसर हो सकता है, ठीक है. Many hormones such as testosterone have their effect through transcription factors as well. So, inducible enzyme is an enzyme that is synthesized only when its substrate is present. Repressible enzyme is an enzyme that is normally produced whose synthesis is prevented by the presence of an effector. And transcription factor, जो कि molecule that affects whether or not a gene is transcribed, they're always there to assist everything. They act in very similar ways in plants and animals. जैसे चैप्टर 15 में हमने देखा था, प्लांट हार्मोन जो जिबरेलिन होता है वो सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ गुड अ हार्मोन कैन इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन. वो अब जर्मिनेशन प्लांट सच एज व्हीट एंड बार्ले बाय स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज. यहां से पता लग रहा है कि जिब्रेलिन प्रोडक्शन तब तक नहीं हुई जब तक अमाइलेज सिंथेसाइज नहीं होगा. इफ जिब्रेलिन इज अप्लाइड टू बार्ले सीड्स, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फॉर अमाइलेज. अब जब तक जिब्रेलिन हार्मोन प्लांट में नहीं आएगा, और जैसे ही आ जाएगा उसी वक्त सारी एमाइलेज प्रोटीन एमाइलेज एंजाइम बनना शुरू होगा ना. एन एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन. तभी आपके पास mRNA ट्रांसक्राइब करने के लिए आएगा सिर्फ एमाइलेज के लिए कि भाई जिब्रेलिन आ गया, अब मुझे जल्दी जल्दी एमाइलेज बनाना है. सो ये आपके पास नहीं, इसको अभी नहीं देखना. जिब्रेलिन हैज दिस इफेक्ट बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डेला प्रोटीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन था क्या, कैन यू टेल मी.
Gibberellin was like it stimulates growth in plants. It's the hormone that stimulates growth in plants and cell division. So it's cell elongation too. ओके गुड। अब जिब्रेलिन ने क्या करना है, उसने स्टिमुलेट करना है सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज। ठीक है। नाउ जिब्रेलिन हैज दिस इफेक्ट बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डेला प्रोटीन्स। A molecule known as DELA protein is a repressor protein. DELA proteins normally inhibit the binding of a transcription factor such as phytochrome interacting protein PIF to a gene promoter. Gibberellin causes the breakdown of DELA protein which allows PIF to bind to its target promoter, और फिर आपके पास जीन ट्रांसक्राइब हो सकता है एमाइलेज प्रोडक्शन के लिए। डेला प्रोटीन जो हमने चैप्टर 15 में भी सुना था, ये बेसिकली वो रिप्रेसर है दैट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज। गॉट इट? Okay. तो अभी सारा लिंक कैसे कि जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस, क्योंकि हमें ग्रोथ के लिए जिब्रेलिन चाहिए, एमाइलेज चाहिए, बताएं। We need gibberellin for growth, but amylase is obviously needed so that transcription शुरू हो जाए ना. नो, थोड़ा सा, थोड़ी सी खिचड़ी बना दिए, थोड़ी सी। ठीक है। Okay. ग्रोथ के लिए हमें एमाइलेज चाहिए। कभी भी Okay. डायरेक्टली ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स नहीं चाहिए होते। हार्मोन सिर्फ चीजें एक्टिवेट करने आते हैं। ग्रोथ के लिए मुझे क्या Okay. चाहिए? एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ से आएगा? जब प्लांट्स में स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, स्टार्च, एमाइलेज इज अ स्टार्च, राइट? एमाइलोपेक्टिन, एमाइलेज दो Yeah, होते हैं। yeah, yeah. अब एमाइलेज ही हमें वो एनर्जी देगा फॉर द ग्रोथ। लेकिन अब एमाइलेज बनेगा कहाँ से शुरू होगा? जब जिब्रेलिन आएगा। जिब्रेलिन हार्मोन है, मॉलिक्यूल नहीं है, खुद कुछ भी नहीं है, एक इतने से एक छोटू सा एक न्यूरोट्रांसमीटर है बस। इट्स अ हार्मोन जो कि एक्टिवेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज। एमाइलेज ने ग्रोथ करनी है। ठीक है। लेकिन इस हार्मोन को जो इनहिबिट कर रहा है आके, ठीक है, हार्मोन ने आके एक्टिवेट करना है कि यार ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शुरू कर दो। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो ही रही होती है कि डेला आ जाता है। डेला आके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ये जिब्रेलिन हार्मोन हम पीछे से क्यों रिलीज करते हैं? एमाइलेज तो नॉर्मल बन सकती थी, जिब्रेलिन आके इनहिबिट कर देगा और इनको मारेगा, डेला प्रोटीन्स को आके, कि होने दो ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट? फिर आपके पास वो पीआईएफ Yeah. जो है वो आराम से प्रोमोटर पे बाइंड कर जाएगी। प्रोमोटर ने आगे क्या करना है? प्रमोशन करनी है ना। प्रमोटर से याद रख लो कि प्रमोटर कोई भी जो होता है उसने आगे प्रमोट करने जाओ। एक गेट कीपर खड़ा होता है, टोल प्लाजा, जाओ आगे। प्रोमोटर से आगे जाने के लिए हमें डेला प्रोटीन को किल करना होता है, जो कि जिब्रेलिन आके कर देता है। सो here you can see कि PIF cannot bind to the gene promoter because डेला प्रोटीन वहां पे आई हुई है। ये जिब्रेलिन रिसेप्टर है, जिब्रेलिन आ गया। ठीक है। अब ये आके क्या करेगा? जिब्रेलिन बॉन्ड्स विद द रिसेप्टर एंड एन एंजाइम, दिस इनिशिएट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेला प्रोटीन। ये जिब्रेलिन आएगा, बाइंड करेगा और इस इनहिबिटर को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। जब इनहिबिटर ब्रेक डाउन हो गया, अब ये PIF इजीली क्या कर सकता? प्रोमोट हो जाएगा आगे, एंड द ट्रांसक्रिप्शन कैन बी इनिशियल। ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के ऊपर लगेगा, राइबोसोम जाके क्या कर देगा? पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज द एंड ऑफ योर इनहेरिटेंस चैप्टर। गॉट इट? Yeah. So I have a question. हम्म। Like repressor proteins, are they're just inhibitors in another form? Is that true? देर जस्ट इनहिबिटर, बट अ गुड इनहिबिटर। किस तरह से गुड इनहिबिटर है बॉडी के लिए? I don't know. It's like there's no difference. नहीं नहीं, देखो, रिप्रेसर प्रोटीन आपकी बहुत ज्यादा जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी रिप्रेसर प्रोटीन डज हेल्प अस। गॉट इट? Okay. डेला Okay. प्रोटीन इज completely बैड, यू हैव टू किल दैट, अदरवाइज द प्लांट वोंट बी एबल टू ग्रो। ठीक है। Okay. यस, ये हो गया। ऑलराइट, कैन यू टेल मी हाउ डज जिबरेलिन प्रोडक्शन एंड डेला प्रोटीन आर कंट्रोल्ड? कैन यू टेल मी द होल प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया था? So can you repeat the question? The Della protein and gibberellin production. Tell me that everything. Okay, fine. So okay, I'm just gonna say it. Okay. So basically, amylase is needed for growth, and gibberellin is just a hormone which helps stimulate growth. It's not a molecule or anything on its own of any sort. Hmm. So DELA is a repressor protein, which obviously stops the promoter proteins. And DELA, like I'm just saying this in very ठीक layman है, terms, ठीक है। but
ठीक है. So since delta protein repressor protein है, तो हमें क्या करना होता है कि since it inhibits the binding of the transcription factor, so um basically um gibberellin is gonna be delta protein, Good. and yeah, and so obviously that is gonna help with the transcription process, and then etc. This ठीक है, is just बता दी. very ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन dumbed down. प्रोसेस तक ही बताना है. आगे ये नहीं बताना कैसे बनता है माइनस, वो आप एएस में कर चुके चैप्टर 6 में. ठीक है, गुड हो गया. Now let's have a quick revision and go through the gene control and prokaryotes, where we have talked about lac operon, repressor gene, and the two types of gene जिसमें आपके पास regulatory और structural genes आती हैं and how they work together. Hi there everybody, in this video we're looking at gene control in prokaryotes. Now the first thing we need to do is make sure we understand the difference between these two kinds of genes, structural genes and regulatory genes. So let's say we have a length of DNA and there's a section of that DNA, a gene, which we're going to call a structural gene. Now when that gene undergoes transcription, so when it's transcribed, that structural gene will produce, after the processes of translation, it will produce a structural protein. So this means a protein which is used by the cell. So it's either going to be something which actually forms part of the cell structure itself, or it could be some sort of metabolic protein such as an enzyme. Now, if you've got a protein being produced, it takes energy and it takes material to produce this protein. So whenever transcription takes place, that uses material and energy. Cells don't want to be using material and energy if they don't need to. So if this structural protein is not needed, the cell does not want to be transcribing this structural gene. So genes can be turned off and they can be turned on. So if a gene is expressed, then that means the gene is turned on. But if we turn the gene off, then that gene is no longer expressed and the protein will not be produced. So the way that the cell does this is by using something called a repressor protein, which is this purple bit here. So when the repressor protein binds to the DNA, and it binds, as you can see, just above where the structural gene is, when that happens, transcription doesn't take place and therefore our structural protein is not produced. Now a repressor protein is linked to a regulatory gene. So when a regulatory gene is transcribed, the product of that will be our repressor protein. And then the repressor protein is able to bind to the DNA. Now whether or not it binds is determined by different things, and we're going to look at that in another video. Important to note that the site of the regulatory gene and the structural gene, it's on the same length of DNA, of course, they're just not perfectly next to each other. So the regulatory gene will be a little bit of a distance away from where you find the structural gene. Okay, so structural genes produce genes which are involved in the structure or the metabolism of the cell, and regulatory genes will produce proteins which are involved in controlling whether or not those structural genes are transcribed or not. Okay, so we now need to look at two different kinds of enzymes. So remember, enzymes could be the product of our, the transcription process. So if we again take our length of DNA which contains a structural gene, transcription of that structural gene will result eventually in our structural protein, and we've said before that that structural protein can be enzymes. So we're specifically looking here at structural proteins which are enzymes, and let's just make it look a bit like an enzyme. There we go. So here's our enzyme and there's our active site. So we know that we're wanting to be able to control whether or not this enzyme is
produced, so the cell will only want to produce that enzyme if it's actually needed. And let's first of all look at inducible enzymes. So inducible enzymes, we have here our repressor protein, and the repressor protein at the moment is bound to the DNA, which means that transcription of that structural gene will not take place. The default state of an inducible enzyme is off. So that means that the gene coding for that inducible enzyme, the default state is that it is not transcribed. So normally, in a normal situation, that enzyme, the inducible enzyme, is not produced by the cell because the repressive protein is usually bound to the DNA. Now, if you have a situation where the substrate for that enzyme is present in the environment, which means that the cell needs the enzyme because it wants to use the enzyme to break down the substrate, then we want to be producing our enzyme. So the substrate, so here's our substrate, is now present in the environment. It wasn't present before, but it is present now. This substrate is able to bind to our repressor protein. And when that happens, it causes a change in the shape of the repressor protein, and it means that the repressor protein is no longer able to bind. So the presence of the substrate in the environment causes the repressor protein to detach from the DNA. That means that transcription is now able to take place because the repressor protein is no longer bound. So we produce our structural enzyme. So this is our inducible structural enzyme, and that means that the cell is making the enzyme, and the enzyme is therefore able to bind to the substrate and break it down. So this is a way for the cell to be able to use the substrate. It produces the enzyme to be able to break down the substrate, but it only does that when the substrate is present. Okay, now the second type of enzyme, the repressible enzyme, is kind of just the opposite really. The default state is on. So again, here's our DNA, here's our structural gene. It's a different structural gene because it's going to be coding for a different enzyme. And the normal state in the cell will be that our repressor protein is not bound to the DNA. That means that transcription takes place, and it means that our enzyme, our repressible enzyme, is produced. Now, if there is a substance present, now this is not the substrate. It is a small molecule, sometimes called an effector molecule. It will probably have something to do with our enzyme here. It could be the product of the enzyme-controlled reaction. But the important thing is this is not the substrate of the enzyme that was produced. So, there is some kind of molecule which is present in the environment, and when that molecule is present, it binds to the repressor protein, which causes a change in the shape of the repressor protein, which means the repressor protein binds to the DNA. So now it's bound, transcription cannot take place, and the enzyme is not produced. So the structural gene is no longer being expressed. So if we summarize that, what we're saying is, in an inducible enzyme, the presence of the substrate induces transcription. It causes transcription to happen. The presence of the substrate, transcription happens, we end up with our enzyme. If there is no substrate, there is no transcription, there is no enzyme. With the repressible enzyme, the presence of a small molecule, as a particular small molecule, will repress or prevent transcription. So when the molecule is present, the repressor protein binds and the structural gene is not transcribed. If this molecule is not present, the repressor protein doesn't bind, and we do get our enzyme being produced. Okay. All right.
This was the summary of inducible enzyme, repressive enzyme, structural gene, repressive gene, कब attach होगी, कब नहीं होगी, it all depends on your substrate concentration as well. ठीक है? So just for a summary, if you look at these two last paragraphs and let's give them a read as well, you can see that the lag operon provides an example of how a prokaryote can alter the transcription of a cluster of structural genes coding. वो structural genes का जो cluster था उसकी कैसे रोक सकता है production को, which and those structural genes are very important for the coding of enzymes concerned with the lactose uptake and metabolism. Lactose ही नहीं break down होगा जब तक आपके पास वो genes नहीं code होंगे, depending on not whether or lactose is present. स्ट्रक्चरल जीन्स इंपॉर्टेंट है, क्या होती हैं 2 मार्क क्वेश्चन, रेगुलेटरी जीन्स क्या होती हैं 2 मार्क क्वेश्चन, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती हैं और इंडिसिबल एंजाइम्स क्या होते हैं 2 मार्क क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टार्टिंग इनहेरिटेंस क्वेश्चन, जो आप टॉपिकल्स के अंदर भी देखोगे. Structural genes codes for proteins required by a cell for its structure or metabolism, whereas regulatory genes control the expression of other genes. A repressor protein can block the synthesis of a repressible enzyme by binding to the gene's operator site. An inducible enzyme is synthesized only when its substrate is present. And then we have transcription factors, important ones and other ones as well. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं यूकैरियोट्स में ऑपरॉन लैक ऑपरॉन्स नहीं होते, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूकैरियोट्स से मेक श्योर दैट द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन करेक्ट सेल एट द करेक्ट टाइम एंड टू द करेक्ट एक्सटेंट. In plants, gibberellins allow gene transcription by causing the breakdown of DELA proteins which inhibit the binding of your transcription factors. Is it clear? जी. All right.